5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തെലങ്കാന, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, മിസോറാം, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗവും ചേരുന്നുണ്ട്. So friends, just to give you an overview, the Mizoram Assembly's term is on 17th December 23. Then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 1/6 है। और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं, जो 16.14 करोड़ हैं कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं। सो द एंटायर कंट्री बाय दैट स्टैंडर्ड वुड बी गोइंग टू पोल्स इन ऑलमोस्ट इन द 1/6 ऑफ द कंट्रीज spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80+ voters, centenarian voters, and also the improving the election gender ratio for these states. अगर आप देखेंगे तो जो PWD हैं उसके टोटल वोटर्स की संख्या 17.34 lakhs है, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80+ 24.7 and centenarian voters 32,410. All these three categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी। और फ्रेंड्स, द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे इलेक्टर जेंडर रेशियो, तो दो स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज़्यादा फेवरेबल है विमेन का। इट इज़ 1063 एंड 1012, विच इज़ अ वेरी हैप्पी स्टेट। इन अदर स्टेट्स ऑल्सो इट हैज़ इम्प्रूव्ड because of the special efforts undertaking during the SSR, और इस SSR की वजह से इन सब में भी ये electoral ratio काफ़ी बड़ा है। तेलंगाना is also very high, 9998, and so there is improvement even in the Rajasthan. Now, if you look at the inclusive electoral roll, we are emphasizing a lot. Let me repeat, जो electoral roll है वो पूरी तरीके से pure हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है। और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो एसएसआर पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है। सो जस्ट टू से दैट वुमेन वोटर्स, यंग वोटर्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स, ट्रांसजेंडर्स, सबके ऊपर में इस एसएसआर में जो इन 5 स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया, ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्टरल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर पोलिंग स्टेशन पे लेके आए। सो दिस इज द एफर्ट, हाउ डू वी फर्स्ट एंटर देम इनटू द रोल एंड देन ब्रिंग देम टू द पोल। सो फ्रॉम रोल टू पोल is the emphasis by which we are all working. So now friends, very interesting and a special effort which the commission is undertaking. ये जो particularly vulnerable tribal groups हैं पूरी कंट्री में 75 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, और कमीशन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं, दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट in the human development indices in the entire country, in the amongst the voters. So we will enroll them fully.
And as a happy reporting to you, in these 4 states, we have 12 PVTGs and they have been enrolled 100%. तो ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि 100% एनरोल हुई हैं और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशंस में लाने की कोशिश करेंगे। अगर यूथ की बात करें तो 60 लाख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 to 19 years in these 5 states. And as you are all aware, there was an amendment for qualifying dates to be changed to 4 dates instead of the 1st January of the every year. So उसकी वजह से 15.39 lakh voters are such who are completing their 18th year after the 1st January 2023. And because of this amendment, 15.3 lakh voters would be able to exercise their franchise in this election. This is the positive effect and of that amendment which we brought. And in line of that, we are also taking up to showcase that these 2,900 plus polling stations would be managed by our youngest employees, so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep encountering in states after states. Similarly, if we come to women, as I mentioned earlier, women का जो gender ratio है वो भी लगातार improve हो रहा है. So Chhattisgarh has improved from 995 to 1012. For Madhya Pradesh from 917 to a jump of 945. Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio. And Rajasthan and also Telangana from 982 to 998. And net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. तो अब एफर्ट ये है कि उनको पहले हमने पोल में जोड़ दिया और अब हम उनको पोलिंग स्टेशंस पर लेके आए by providing them all kinds of facilities which are possible. How do we do that? So if you look at the inclusive and pure nature of the electoral roll, since the efforts we are making after the second SSR which happened in these 5 going states, 57.89 lakhs is the total addition, and this happened. There is an house-to-house survey which is happening which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run-up to the SSR for the entire country. Deletions were 20.59 lakhs, and most importantly the modifications. किसी का एड्रेस गलत है, किसी का फोटो ठीक नहीं है, किसी का फोन नंबर डाला हुआ नहीं है, सबके लिए 22.35 लाख मॉडिफिकेशंस और 18 to 19 एज ग्रुप में 18.37 लाख एडिशंस. ये सभी स्लाइड्स की कॉपी आपको साइड बाय साइड मिल रही होगी. These are being put on the media's website and all. So you don't have to repeat this. I am sure you are getting it side by side, and it will be posted also in our website immediately. Next. Before coming to the overview of polling stations, friends, through you, let me tell everybody, all voters in the country, that the general SSR hai, summary revision for the year 24 would start from 17/10/23. Draft rolls will be published on 17/10/23. तो मेरा सभी वोटर्स से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपना अपना नाम देखें, अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें. कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराएं, महिलाओं को जिसको भी ऐड कराना है ऐड कराएं उसमें. किसी को चेंज करना है, फ़ोटो चेंज करनी है, मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखाएं. घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे would be undertaken by BLOs from 17/10/23 to 30/11/23, यानी 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है, everybody is welcome to do this either through BLO or through the voter helpline BHA application. You can directly do this. So I would appeal through you to everybody to kindly make these changes. Friends, now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these 5 states, and of which 1.01
would have webcasting facility. We have prescribed 50% webcasting, and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own. So this would be close to 1.01 lakh. Then all this would be monitored through the control rooms, and the number of women managed polling stations there would be 17,734 polling stations, which will be model polling stations. There would be PWD managed polling stations, 621, and women managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, लाइट, हेल्प डेस्क, साइनेज, सभी पोलिंग स्टेशंस पे सुविधा होगी। और प्रयास ये है कि पहले आपको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल करें। शामिल करने के बाद आपकी जो वोटिंग एक्सपीरियंस है पोलिंग स्टेशन पे, उसको भी और सहज और सुगम बनाएं, और उसको ये भी माध्यम बनाएं कि सोसाइटी में पीडब्ल्यूडीज, ट्रांसजेंडर, वुमेन, ओल्ड एज, सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू दी मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, and we showcase and we put an example before the society that yes, at the polling station, when we can do this respect and the separate treatment for them, which is their due, why can't we do it elsewhere in the society? So this is our modest effort to bring this fact into the limelight. Coming to the elderly voters, as you know, in all these states also, they will have the facility to vote from their home. Form 12D 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं. Similarly, next, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था. बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सकें. अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है. 8 किलोमीटर इससे बचेगा चलना. जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़, दिस इज दोज एरियाज. सिमिलरली इन राजस्थान, दिस इज ऑल्सो ए न्यू बूथ. तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े. वैसे भी हमारा नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर में हम देंगे, बट जहाँ पॉसिबल नहीं था वहाँ भी हम भर रहे हैं. इसी प्रकार से जो हमारे, मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं. बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा, जो कि मांडला एमपी में, जस्ट दी शोकेसिंग. और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें, पिपरिया डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा एमपी, इसमें 165 kilometers from district headquarters, tribal dominated district. People will go, and this is the kind of rivers and all terrain they will cross. This is in Mizoram, 22 non-motorable polling stations. तो ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो पोलिंग पर्सनल हैं वो कितनी मेहनत से, कितनी दूर में अपना ड्यूटी करने जाते हैं. और 6 महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं. और इसीलिए आई विल लाइक टू अपील थ्रू यू टू ऑल दी वोटर्स ऑफ दीज 5 स्टेट्स कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आएँ. स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ, विमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, दोज वेयर वी सी अ लिटिल एपैथी. फ्रेंड्स, आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की, और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे. और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफ़ी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है. नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना. क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था. वंस दे गिव दिस इंफॉर्मेशन, इट इज़ फॉर द वोटर टू डिसाइड on the basis of an informed choice as to what he wants to do.
Another new initiative we have taken is on the integrated election expenditure monitoring. कुछ समय पहले, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम सोचते हैं हमें मिलेंगे, और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहाँ से कितने पैसे मिले, और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। तो पीछे देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थीं, और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी। तो इन सभी चीज़ों को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, नाउ न्यू IT सिस्टम हैज़ बीन स्टार्टेड, and in which the contribution report which is due of every year by 31st October would have to be filled. Similarly, annual audit reports political parties को अब इसी IT tools में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे, और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन, जिसमें वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो, और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट, ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया। तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा। दिस विल हेल्प इन ease for the political parties to fill up these details online, and would also help us in keeping it at one place and do whatever assessment and analytics is possible in addition to housekeeping. Similarly, जो inducement free elections का focus चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है, उसके लिए भी एक election seizure management system इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन 5 assembly elections में। What is this? जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं, जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल, कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए। डोंट वर्क इन साइलोज, वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, बट इट डजंट गेट कोऑर्डिनेटेड ऑफन। सो दिस सिस्टम विल गिव एन एक्सेस, will onboard all the central and state enforcement agencies during the election period, and they will have to report as soon as any action they take, and if they don't fill up, it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency. This will also help us in compiling, do the trend analysis, do various kinds of things possible in that particular state. और आप सब अवगत हैं कि हर स्टेट के बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर मिज़ोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है, तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है। ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ द रिस्पेक्टिव एनफोर्समेंट एजेंसीज वुड गेट कोलेटेड, एंड वी होप would also get analyzed on a far more real-time basis, so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them. In this reference, we have got some check posts established, which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, in all 940 check posts. These 940 checkposts belong to different enforcement agencies, which is namely, by and large, police, state police, excise, commercial taxes, forest and transport. तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं। Now what we have directed them to do a coordinated effort, pool their resources, establish synergies. पांचों एक साथ मिलके काम करें, और क्या काम करें इन 940 प्लस चेक पोस्ट पर? इंटरस्टेट बॉर्डर्स में they will keep a very strong watch, and we have almost told them to dry up inflow of cash, liquor and drugs. आपको जब पिछले कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो वहाँ जाने के बाद जब हम रिव्यू करके आए, तो जो 2018 का सीजर था वो MCC अनाउंस होने तक उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था। सो दिस इज़ ए रिन्यूड फोकस,
and all the checking of cargo movement through non-scheduled chartered flights. This we will issue the guidelines also in greater detail. ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन पोल बाउंड स्टेट्स में कोई मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है. कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो. मनी पावर, all these agencies have been strictly asked to keep strict vigil and report in the system which we have stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers and the expenditure observers, and adequate CAPF. Similarly, the directions again at the polling stations, wherever necessary, we will keep the female staff to check impersonation. We will keep polling parties to move only in the official vehicles, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए थे उस तरह की घटना ना हो. ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place. Though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और चेंज इस बार किया गया है because of the experience which we had in certain states. जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे till the date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been changed now. ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected and the postal ballot facility is available in the same sense but at the facilitation center. Next, now coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement-free elections, because money power is one thing which we want to restrict, we now will come to the schedule which you are awaiting, state by state. And now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in the for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule.
And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up. Just keep sitting and just put up your hands and I'll direct the micer to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे അപ്പോൾ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് കണ്ടത്. പുരുഷ വോട്ടർമാർ വിധിയിടുന്നത് 16.14 കോടി ആളുകളാണ്. ഇതിൽ പുരുഷ വോട്ടർമാർ 8.2 കോടി ആളുകളും സ്ത്രീകൾ 8.2 കോടി ആളുകളുമാണ് ഇത്തവണത്തെ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർമാരായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ 2 ഘട്ടങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടം നവംബർ 7, രണ്ടാം ഘട്ടം 17-ാം തീയതിയിലായിരിക്കും നടക്കുക. നവംബർ 17-ലായിരിക്കും നടക്കുക. വോട്ടെണ്ണൽ ഡിസംബർ 3-ന് നടക്കും. തെലങ്കാന നവംബർ 30-ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാനിൽ ഒറ്റഘട്ടമായി ആയിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പുതിയ വോട്ടർമാർ 60 ലക്ഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിശദാംശങ്ങളുമായി നമിത ചേരുന്നുണ്ട്. നമിത, ഇപ്പോൾ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 5-ൽ 5 എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനം, ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തെലങ്കാന, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, മിസോറാം, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? ഇപ്പോൾ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 60 ലക്ഷത്തോളം വോട്ടർമാരാണ് ഇത്തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതലായി ഉള്ളത്. 16.14 കോടി എന്നതാണ് ഔദ്യോഗികമായ വോട്ടർമാരുടെ കണക്ക്. ഇതിൽ പുരുഷ വോട്ടർമാരെന്ന് പറയുന്നത് 8.2 കോടിയാണ്. വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ നമിത ചേരുന്നുണ്ട്. നമിത, ഔദ്യോഗികമായി ഇപ്പോൾ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം നടന്നിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? അനുജ, ഇപ്പോൾ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് ഇലക്ഷൻ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. മിസോറാമിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ 7-നാണ് നടക്കുന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ 2 ഘട്ടമായിട്ടായിരിക്കും പോളിംഗ് നടക്കുക. നവംബർ 7-ന് മധ്യപ്രദേശിലും പോളിംഗ് നടക്കുന്നതായിരിക്കും. നവംബർ 17-ന് രാജസ്ഥാനിൽ ഒറ്റഘട്ടമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. പോളിംഗ് നവംബർ 21-നായിരിക്കും. തെലങ്കാനയിൽ ഒറ്റഘട്ടമായിട്ടായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. മിസോറാമിലും ഘട്ടമായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. നമിത, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു സെമി ഫൈനൽ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എല്ലാ പാർട്ടികളും നോക്കിക്കാണുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തക സമിതി യോഗവും ഒക്കെ ചേരുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ? അനുജ, 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 8.2 കോടി പുരുഷ വോട്ടർമാരും വനിതാ വോട്ടർമാർ 7.8 കോടി വനിതാ വോട്ടർമാരുമാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടാവുക. 60.2 ലക്ഷം കന്നി വോട്ടർമാരാണ് ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ആകെ 16.14 കോടി ജനങ്ങളാണ് വിധി എഴുതുക. 1.77 ലക്ഷം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 1.01 ലക്ഷം സ്റ്റേഷനുകളിലും പോളിംഗ് വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. 679 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇത്തവണ വിധിയെഴുത്ത് നടക്കുക. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സംഭാവനകളൊക്കെ ഓൺലൈനായി നൽകണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തികളിലും കർശന സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായും NIA പോലുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുമായുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. ഇത്തവണത്തെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി
മെച്ചപ്പെടുത്താനും പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്താനുമൊക്കെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനൊക്കെ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുതിർന്ന വോട്ടർമാർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുമൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടി ഇത്തവണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ ചുമതലയിലൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തമായിരിക്കും ഇത്തവണ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അനുജ, ശരി, വ്യക്തമാണ് നമിത. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, തെലങ്കാന, മിസോറാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി ഇത്തവണ 60 ലക്ഷത്തോളം പുതിയ വോട്ടർമാർ ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനാകുന്ന പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇത്തവണ മുതലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 20.59 ലക്ഷം വോട്ടർമാരെയാണ് ഇത്തവണത്തെ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ 2 ഘട്ടമായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. രാജസ്ഥാനിൽ ഒറ്റഘട്ടമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വോട്ടെണ്ണൽ ഡിസംബർ 3-നാണ് നടത്തുക. വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് നമിതയാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങി വരാം.